Our second topic for today's class is the other pillar of Islam, which is zakat. Okay, zakat is the uh, we can say it is a third or we can say it is the fourth pillar of Islam. कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारे लिए कोई गलत काउंट नहीं होगा, ठीक है, वो सही काउंट होगा. We can say it's a third pillar or we can say it's a fourth pillar because in most of the places it is considered next to prayer. That is why we can say it is the third pillar. So इसकी भी outline basically वही है that Islam is based on the five pillars. Perform to declare to bear witness that there is no God but Allah, performing five times prayer 5 times a day, fasting in the month of Ramzan, paying the obligatory charity, performing pilgrimage if one can afford. It was made obligatory in the second year of Hijrah. देखो इसकी भी outline वही बनेगी. पहला पैराग्राफ डिटेल इंट्रोडक्शन का आएगा. That is one of the five pillar. It is made obligatory on the second year of Hijrah, along with fasting, and it's mentioned 32 times in the Holy Quran, and except for the six times it's always mentioned with the prayer. Okay, this shows the importance of zakat in Islam, and we can say that zakat is next to prayer in Islam. Islam में zakat is next to prayer. ठीक है, zakat is that obligation which is a financial worship. ठीक है, it's that worship which is related to financial. It is not physical. ठीक है, तो it's something related to financial worship, and Holy Quran repeatedly command Muslims to establish prayer and pay obligatory charity. Okay, and then you can say that how on whom it is obligatory. You can mention that zakat is obligatory on Muslims, adult, sane, those who possess amount equal to निसाब. ठीक है, बेनिफिट्स की बात हम बाद में करेंगे एट द एंड. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. इंपॉर्टेंस में आप ये कह सकते हैं कि इट्स मेंशन 32 टाइम्स इन द होली कुरान. ठीक है, ऑलवेज मेंशन विद द प्रेयर. ओके, मोस्टली मेंशन विद द प्रेयर. वी कैन मेंशन के when a delegation came to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and asked about Islamic teachings, he first mentioned prayer and then he mentioned zakat. This shows कि zakat is next to prayer in Islam. और ये भी हम बात कर सकते हैं कि when after the death of the Holy Prophet, peace upon him, after his demise, when some people and some tribes they refused to pay zakat, Abu Bakr radhiyallahu anhu fought against those people who refused to pay zakat. Means कि उन्होंने उन लोगों को इस्लाम से, he considered those people out of Islam, and that is why he waged a war against these people. ठीक है, तो इसकी ऑब्लिगेशन के बारे में हमने बात कर दी, उसकी इंपॉर्टेंस को हमने शो कर दिया. हियर यू कैन डिस्क्राइब हु इज साहिब निसाब. साहिब निसाब इज द वन हु पोजेस मिनिमम. निसाब इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द वेल्थ विच द पर्सन पोजेस. ठीक है, ही हैज़ टू पे, इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन हिम टू पे ज़कात. निसाब को डिस्क्राइब करना है. अगला पैराग्राफ आपका जो होगा, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताया कि मीनिंग एंड डेफिनेशन और उसकी ऑब्लिगेशन कब हुई थी. सेकंड पैराग्राफ में आपने उसकी इंपॉर्टेंस को मेंशन किया. इंपॉर्टेंस में तीन बातें आ गई. 32 टाइम्स कुरान में है, कुरान में बार बार नमाज और ज़कात साथ साथ है. और फिर ये कि प्रॉफिट के पास जो डेलीगेशन आया उसने जो पूछा, प्रॉफिट ने उसको जो टीचिंग दी वो. और चौथे नंबर पे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो उन लोगों के ख़िलाफ़ जंग की उसको डिस्क्राइब कर दिया. अगले में आप बताएं कि ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन. ठीक है, वो तो हमने डिफाइन शुरू में कर दिया. फिर आप बताएं कि निसाब इज़ व्हाट इज़ निसाब. ज़कात इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन साहिब निसाब, एंड साहिब निसाब इज़ द पर्सन. साहिब निसाब वो शख्स है, वो बंदा है कि जिसके पास मिनिमम अमाउंट होगी. ठीक है, द वन हु हैज़ दैट मच मिनिमम अमाउंट, कि अगर उसके पास उतनी मिनिमम अमाउंट है तो हम कहेंगे कि वो साहिब निसाब है. एंड ही इज़ ऑब्लाइज टू पे ज़कात. इट्स ऑब्लिगेटरी ऑन हिम टू पे ज़कात. ठीक है, वो अमाउंट मिनिमम क्या है आपको वो डिस्क्राइब करनी है अपने आंसर के अंदर. हर चीज़ की मिनिमम अमाउंट और उसके ऊपर रेट को डिस्क्राइब करोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन दैट ऑन गोल्ड it is 7.5 tola. You can write it in tola or you can write it in grams. ठीक है, in the same way you can mention silver. It is 52.5 tola or 612.36 grams. Okay, whoever has 52 and a half tola of silver and 7 and a half tola of gold or amount or cash or sales goods. ठीक है, उसके पास अगर कैश है, if the person has cash or amount equal to this or sales good, he has to pay zakat at the rate of 2.5%. Okay, on cash, gold and silver. On cash, gold and silver, zakat is paid at the rate of 2.5% at the end of the year.
ठीक है, ऑन हिज सेविंग्स, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज ज़कात इज पेड एनुअली, इट्स एन ऑब्लिगेशन विच इज़ टू बी परफॉर्म्ड ईयरली बेसिस। फाइन, इसके अंदर बिजनेस गुड्स भी आ जाते हैं, सेल्स गुड्स भी आ जाते हैं। बिसाइड्स दिस यू हैव टू मेंशन agricultural produce, irrigated, naturally irrigated land. On this, they have to pay 1/10 of the total produce, and you can write it in the percent. Percent का मतलब होता है इसमें 10% बनेगा. And if the land is irrigated by artificial means of water, on such land, उसकी जो produce होगी उसमें आप कहेंगे 1/20th of the total produce will be calculated as zakat and will be given as a poor tax. Okay. तो on the agricultural produce, okay, from a land which is naturally irrigated, ठीक है, then इसमें क्या है 1/10 of the total produce, 10%. एंड इफ इरीगेटेड आर्टिफिशियली तो उसके अंदर कम है, 1/20th है, एंड 1/20th मीन्स दैट 5% ऑफ द प्रोड्यूस विल बी गिवन इन ज़कात. यू कैन फर्दर डिस्क्राइब एंड टॉक अबाउट द लाइफ स्टॉक, और माइंस को भी मेंशन कर सकते हैं. इन फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ माइंस द पर्सन हैज़ टू पे 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस विल बी गिवन इन ज़कात एंड इज़ नोन एज खम्स. ओके, एनिमल्स में आप बता दें 1 sheep और goat will be given from 40 to 120, बस फर्स्ट मेंशन करो. फाइन. एंड on 30 to 39 bull, okay, a 1 year old calf will be given as zakat. Okay, and you can further talk about the camel. ठीक है, कैमल्स के बारे में भी अगर बता दोगे तो अच्छी बात है. यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप कह सकते हैं 5 to 9 camels. ठीक है, 1 goat is to be given in the way of Allah as zakat. डिस्क्राइब करना है ज़कात का निसाब और ज़कात के रेट को अपने आंसर के अंदर लेकर आओगे. डिटेल पैराग्राफ बनेगा, क्योंकि समटाइम्स दे आस्क यू टू राइट कि निसाब क्या है, रेट क्या है, कि ज़कात कैसे प्रैक्टिस की जाती है. व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू राइट अबाउट द वे इट इज़ प्रैक्टिस, द वे इट इज़ परफॉर्म, ठीक है, आपने ये सब चीज़ें, आपकी आउटलाइन आंसर की ऐसी बनेगी, मीनिंग डेफिनेशन के साथ, उसकी इंपॉर्टेंस के बाद उसकी निसाब और रेट को डिस्क्राइब किया. फिर आप बता दें कि टू हुम इट शुड बी गिवन एंड टू हुम इट शुड नॉट बी गिवन. ठीक है, रेसिपेंट्स ऑफ ज़कात. The verse Surah 9 and verse number 60 of Surah 9, Surah Tawbah, it mentions 8 types of people to whom zakat could be given. आपको इसी तरीके से आना चाहिए कि 8 different types of people to whom zakat could be given. Identify those people to whom zakat should be given. 8 जो हैं, ठीक है, it is for the poor. ये वर्स याद करो, ठीक है, वर्स याद होनी चाहिए. zakat is for the poor. सेकेंड नंबर पे the needy. पहले के नंबर पे कौन है? पोअर हैं, फिर नीडी हैं. नंबर 3 दोज एम्प्लॉयड टू एडमिनिस्टर द फंड्स. ठीक है, ज़कात की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट, दे कैन रिसीव देयर सैलरी फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ज़कात. और किन के लिए? हुज हार्ट हैज़ बीन रिसेंटली रिकनसाइल्ड टूवर्ड्स द ट्रुथ. ठीक है, जिनके दिल अभी भी रिसेंटली एंड न्यूली कन्वर्ट्स. ओके, दोज इन द बॉन्डेज. ओके, दिस इज द 5th वन. ठीक है, दोज इन डेट. ठीक है, मखरूज, जिसने कर्ज लिया, अनएबल टू पे इट बैक. इन द कॉज ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में, फी सबीलिल्लाह. एंड फॉर द वेफेयर, ट्रैवलर. ठीक है, ट्रैवलर को, मुसाफिर को दी जा सकती है. दीज आर द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टू हुम ज़कात कुड बी गिवन. ठीक है, ज़कात इज़ फॉर द पुअर, द नीडी, फुकरा के लिए, मसाकीन के लिए. दोज एम्प्लॉयड टू एडमिनिस्टर द फंड्स. ठीक है, दोज हुज हार्ट हैज़ बीन रिसेंटली रिकनसाइल्ड टू द ट्रुथ. Those in bondage, because either they are slaves or the captives. Those in debt, those who have taken the loan and they are unable to repay it back. They have taken the loan because of some genuine reason and they are unable to repay it back, so they could be helped from the amount of zakat. In the cause of Allah Almighty, ठीक है, in the way of Allah, in the cause of Allah, अल्लाह ताला के रास्ते में, and to the wayfarer, मुसाफिर को. This has been ordained by Allah Almighty and Allah is full of knowledge and wisdom. आपके आंसर में ये सब बातें नहीं आनी चाहिए जो यूजुअली स्टूडेंट्स के आंसर में आती हैं कि ऑर्फन्स को दी जाती है, विडो को दी जाती है. ऐसा कुछ नहीं है ऐसा. ठीक है, कंडीशंस ये हैं कि पुअर हो, नीडी हो. अगर पुअर, विडो पुअर है तो देन शी कैन गेट हेल्प फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ज़कात. ऑर्फन इज पुअर, देन द ज़कात कुड बी गिवन टू देम. सो टू होम इट शुड बी गिवन, आपने वर्स कोट की, आपने बता दिया कि 8 टाइप्स ऑफ पीपल हैं, एंड देन यू कैन फर्दर मेंशन के उनको लिस्ट कर दो, उनकी वर्क से रिलेटेड वर्स कोट करो, देन लिस्ट कर दो. फिर आप बता दें टू हुम इट शुड नॉट बी गिवन. ठीक है, ज़कात शुड नॉट बी गिवन टू
to the Muslim, it should not be given, sorry, it should not be given to the non-Muslim, it should not be given to the rich Muslim. ठीक है, rich, ठीक है, मुसलमान को नहीं दी जाएगी जो कि मालदार हैं, ठीक है, जो साहिब निसाब हैं. एंड इट कैन नॉट बी गिवन टू द प्रॉफिट्स डिसेंडेंट्स, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द इम्प्योरिटी ऑफ द वेल्थ. एंड सच एन इम्प्योरिटी शुड नॉट बी गिवन टू द प्रॉफिट्स डिसेंडेंट्स. सच पीपल कुड बी हेल्प फ्रॉम द अदर गिफ्ट्स एंड द चैरिटी, दूसरे तरीके से उनको हेल्प की जाती है. एंड ज़कात कुड नॉट बी गिवन टू वंस ओन एंसेस्टर और वंस ओन डिसेंडेंट, ठीक है, ये जो बात है वंस ओन पेरेंट एंड वंस ओन, इसको भी आइडेंटिफाई करो. इट शुड नॉट बी गिवन एज अ सैलरी फॉर द सर्विसेज दैट यू हैव टेकन फ्रॉम अ पर्सन, ठीक है, लाइक मेड और सर्वेंट को उसको एज अ सैलरी के तौर पे नहीं दी जा सकती. सर्टन रूल्स आर देयर, कि जैसे हमने बताया ना कि इट कैन नॉट बी गिवन to the people as the payment of the services, not can be spent on any constructional work for the purpose or for the purchase of the property or for building uh, bridges or any building or digging a well. Okay, such type it cannot be spent. Zakat इन्हीं लोगों को दी जाएगी which are there mentioned in the Quranic verse that we had already identified. These are the people to whom zakat could be given. ठीक है, और फिर जिनको नहीं दी जा सकती उनको ही मेंशन करें. यू कैन कोट अ हदीस के इट शुड नॉट बी गिवन टू द प्रॉफिट्स फैमिली, उसके अंदर हदीस प्रॉफिट की कोट कर दें कि वंस प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सॉ हजरत हसन ईटिंग फ्रॉम द डेट्स गिवन एज सदका. प्रॉफिट पीस अपॉन हिम सेड expel it from your mouth. Is what he said to Hassan, that expel it from your mouth. Don't you know that we the prophet's descendant do not eat sadaqah? Okay, we the prophet's descendant do not eat sadaqah. So this is how the prophet peace upon him mentioned कि किसको दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी. आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट करना है. ज़कात का एक क्वेश्चन तो हो गया कि द वे इट वाज प्रैक्टिस. सेकंड क्वेश्चन के हाउ ज़कात बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल एंड अ कम्युनिटी, ठीक है, एंड इन द सेम वे व्हाट आर इट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आल्सो. तो उसके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो ज़कात के तीन तरह के बेनिफिट्स हैं. बेनिफिट्स का क्वेश्चन आएगा तो अगेन फर्स्ट पैराग्राफ विल बी द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है, आपके आंसर का. उसमें आप बताएंगे कि मीनिंग, डेफिनेशन, फ़र्ज कब हुई, ये सारी बातें करके देन यू कैन राइट अनदर पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस वेरी ब्रीफली कि ज़कात की इंपॉर्टेंस क्या है. देन यू विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट इट्स बेनिफिट्स. बेनिफिट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन डिटेल अबाउट द इंडिविजुअल बेनिफिट. इंडिविजुअल का पूरा एक डिटेल पैराग्राफ बनेगा विद द सपोर्ट ऑफ द कुरानिक वर्सेस एंड अहादीस. ठीक है, तो वन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ज़कात के आप के द पर्सन गेट्स हिमसेल्फ रिलीव फ्रॉम द बेसिक ऑब्लिगेशन. ओके, द पर्सन get it reminds him about a basic duty, and by performing this duty the person gets himself relieved from this obligation, because zakat is a is obligatory on those Muslims who possess nisab. Okay, it's obligatory on sahib nisab. So this is one of the benefit of a person, that with the payment of zakat he gets himself relieved from this obligation. Second benefit आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि it purifies, it is a source of purification. ठीक है, प्योरिफिकेशन की बात करें, प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट एंड द प्योरिफिकेशन ऑफ वेल्थ. ठीक है, दोनों चीज़ें लिखेंगे. इट प्योरिफाइज द हार्ट एंड इट ऑल्सो प्योरिफाइज द वेल्थ. ठीक है, जब प्योरिफिकेशन की बात करें तो यू विल डिस्क्राइब इन डिटेल दैट हाउ इट प्योरिफाइज द हार्ट ऑफ अ गिवर एंड रिसीवर. Okay, Sahib and Isab, with the payment of zakat, he purifies his wealth. Okay, because it is the share, it is the right of the poor person. Okay, it is the right of the poor person in his wealth. So by giving that share to the poor person, that was his right. Now he has purified his wealth for himself. Otherwise, it will make his whole wealth impure for him. That is why there is a Quranic verse also. Allah has commanded Holy Prophet peace upon him, take zakat from their wealth to purify and sanctify them. To purify and sanctify them. ठीक है, take zakat from their wealth to purify and sanctify them. Sanctify, sanctify, sanctify them. ठीक है, तो it's a source of the purification of wealth. Zakat purifies one's wealth at the end of the year. Zakat is the dirt of the people's wealth, and with the payment of zakat, the wealth becomes clean and pure.
ठीक है, वो पाक हो जाती है. Further, you can talk about the purification of a heart. It also, जब purification की बात करें ना, तो फिर इसी के साथ साथ इसकी भी बात करें कि it purifies the heart of a believer from the love of wealth, okay, from greed, wealth and love of wealth and greed. It's a greed, ठीक है, ये greed word है. As he she willingly gives a portion of his wealth to someone else, तो उस माल की मोहब्बत लालच ख़त्म हो जाती है. The one who gives his wealth in the way of Allah, it purifies his heart from a greed, ठीक है, from stinginess, from greediness, ठीक है, from miserliness, ठीक है. This is how it purifies the heart of a giver, ठीक है. To take zakat from their wealth in order to purify and sanctify them. This verse could be quoted here. यह wealth की purification भी quote की जा सकती है. And it also purifies the heart of a receiver also. The receiver's heart gets purified from hatredness and jealousy, ठीक है, उसके अंदर से हसद जलन, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है. अदरवाइज उसके दिल में मालदार से हसद होगा ना, डेवलप होगा. तो दिस इज हाउ इट ऑल्सो प्योरीफाइज द हार्ट ऑफ अ रिसीवर ऑल्सो फ्रॉम दीज बैड इंटेंशंस एंड टेम्पटेशन. बुरे किस्म के ख्यालात से उसका दिल पाक साफ हो जाता है. तो प्योरीफिकेशन को डिटेल में डिस्क्राइब किया. फिर आप बताएंगे कि इट इंक्रीजेज वंस वेल्थ, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंक्रीज एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ रिवॉर्ड. सो व्हेन अ बिलीवर स्पेंड्स, ठीक है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ द इंक्रीज इन द वेल्थ ऑल्सो. ये भी बेनिफिट है कि हिज वेल्थ गेट्स इंक्रीज. समटाइम्स इट इंक्रीजेज इन रियल, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत डबल हो गया, ज़्यादा हो गया. एंड समटाइम्स इट प्रोटेक्ट्स इट ऑल्सो. सो इट्स वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंक्रीज कि आपकी दौलत, आपका माल, आपका पैसा ज़ाया होने से बच गया, चोरी होने से बच गया. It's again another form of an increase. And talk about the reward and talk about the increase that the person will be rewarded and his wealth will be increased so many times multiplied in the form of reward or in the form of the blessings. ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके माल में बरकत होती है. और there is a verse that you can quote in your answer, that the parable of those who spend their wealth in the way of Allah is like a grain of a corn. अल्लाह ताला के रास्ते में जो लोग माल खर्च करते हैं, ठीक है, द पैरेबल, द एग्जाम्पल ऑफ दोज हु स्पेंड देयर वेल्थ इन द वे ऑफ अल्लाह इज लाइक अ ग्रेन, ओके, अ सीड ऑफ ग्रेन, एक मकई, एक भुट्टे के दाने के तरह, ठीक है. जब हम उसको ज़मीन में डालते हैं, इट ग्रोज 7 स्पाइक्स, इट ग्रोज 7 कॉर्न, 7 ग्रेन, एंड ईच corn has 100 grains. This is how Allah rewards so many times multiplied. With one grain, Allah has rewarded a person with 700 grains. Okay, and it depends on the person's sincerity, his intention. The more the person is sincere to Allah Almighty, the more he will get a high reward from Allah. So compensation from Allah Almighty in this way, in this life and also in the hereafter. ठीक है, रिवॉर्ड की बात करें, बताएं कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्लाह's wrath and punishment. It is again a source of protection because those who do not spend their wealth in the way of Allah, Quran has warned such people with a terrible punishment. Okay, what is the terrible punishment mentioned? That on the day of judgment, okay, on the judgment day, in the hereafter, this gold and silver will be made hot in the hellfire, and they will be branded with this on their sides, on their backs, and on their foreheads. And they will be said, this is what you had hoarded, and this is what you have not spent in the way of Allah Almighty. That was all about the इंडिविजुअल बेनिफिट्स. ठीक है, इंसान की अपनी ज़ाती और पर्सनल लाइफ के अंदर उसके क्या बेनिफिट होते हैं. इन द सेम वे ज़कात इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ social benefits, communal benefits. It minimizes the sufferings of the needy and it also bridges the gap between the rich and the poor person. ठीक है, the rich will not become richer and the poor will not become poorer. And you can mention that a small portion of wealth from the rich it gets transferred from their wealth to the poor. ठीक है, एक अमीरों से, अमीर मालदारों से एक wealth का कुछ हिस्सा उन तक ट्रांसफ़र हो जाता है. So while the poor who receives zakat have enough funds to minimize their suffering, which in turn help in them in thinking positive about the rich. This is how it bridges the gap and it diminishes the envy they may develop if it is not effectively practiced. It helps the poor to become independent, self-sufficient. Okay, and in the same way, zakat it can help reduce the crimes in from our society. Okay, there should be a very much efficient system of the payment of zakat in our society, and that we can say that if this system will be implemented effectively, then there will be hardly anyone in our society dependent on the other people.
ठीक है, तो it increases the demand. Okay, देखो उसमें ये होगा कि it will help the person, ठीक है, he will be able to meet his financial needs, ठीक है, अपनी चीज़ों को पूरा कर सकेगा. And it will also eliminate poverty and child labor and such type of, ठीक है, benefits could be achieved from the effective system of zakat. ठीक है, क्राइम रेट्स को कम की बात की, इट कैन लेसर, ठीक है, देयर विल बी लेसर क्राइम रेट्स एज वेल. एंड इट प्रिवेंट्स वेल्थ इन इक्वालिटी. ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स आ गए. ठीक है, ज़कात इज़ द बैकबोन ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम. ठीक है, इट्स द बैकबोन. ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट विल हेल्प establish our economy and it will reduce the poverty from the society. ठीक है, इन द सेम वे अलॉन्ग विद दैट आप कह सकते हैं कि it will promote investment and it will reduce hoarding and it will create job opportunities in our society, because most of the problem in our society it is due to the lack of investment. ठीक है, तो the one who has wealth he will think to spend it in some profitable business. ठीक है, with the investment, ठीक है, it will develop and it will create job opportunities, and जब job opportunities ज़्यादा होंगी तो it will automatically reduce the poverty from our society. In the same way it can help reduce the interest system from our traditional banking system. ठीक है, उससे हमारी ज़कात की सिस्टम से, इफेक्टिव सिस्टम से क्या होगा, इंटरेस्ट, रिबा, जो सूद है वो ख़त्म होगा. बिकॉज when people they will get help from zakat, they will not take loans on interest from the banks. Okay, then तो इसकी वजह से क्या होगा, automatically these conventional banking system will uh, not be offering loans on interest. So ultimately it can end the such type of financial system from from our economic system. That's about zakat, the way it is practiced, the way it helps the and it benefits the Muslim individual and the Muslim community. तो ज़कात के बारे में यही इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास. आप इस तरीके से आंसर इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी.